I've always felt, in my experience, that you don't get opportunity, you have to create opportunities. So that is one thing as to how you perceive, how you perceive the changes around you, how you perceive, we have spoken about, like in the beginning you said, that, well, how do you feel about this? And I actually thought, how do I feel about, the fact that even today, you said even today we are discussing, women's issues, gender balance, gender parity, discrimination. Why even are we discussing it? That's what I thought to myself. And the answer which came to me was, well, decades back, as you said, that when I started my public service career, what was the discourse then? And the notion which came within bureaucracy, within policy, within our own orientation towards what we allocate for women, we all were thinking from a very paternalistic mode, which was talking about women as a recipient of some welfare dole. Women not seen as a partner in development with certain basic entitlements, which today, आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो एक ह्यूमन राइट्स एंटाइटलमेंट है, वो कोई वेलफेयर नहीं है, बट ह्यूमन राइट है. क्यों? क्योंकि आज की तारीख में इस डिस्कोर्स में हम ये कहते हैं कि जिस पैरिटी की बात आप कह रहे हो, वो पैरिटी इट इज़ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ जेंडर बजटिंग फॉर द मेयर एलोकेशन से, it is parity in terms of outcomes which you see translated into reality, whether women work participation, whether female literacy, whether it is your access to higher education. तो मुझे लगता है कि मेरे खुद के देखने का नज़रिए में भी फ़र्क आया है कि हम विमेन वेलफेयर से विमेन एम्पावरमेंट के डिस्कोर्स में चले गए, उसके बाद हम विमेन डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में चले गए, और आज की तारीख में हम विमेन एज एन एजेंसी के डिस्कोर्स पे आ गए हैं, एज एन एजेंसी विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू ट्रांसफॉर्म द वे गवर्नमेंट थिंक्स. नविका जी इज देयर. गवर्नमेंट थिंक्स में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि विमेन एज एन एजेंसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि विमेन आर परसीव्ड टुडे एज मेकर्स ऑफ चेंज. दे कैन मेक एंड ब्रेक थिंग्स, माइंड यू. सो आई थिंक वी हैव ऑल कम अ लॉन्ग वे. The way women are perceived today, so I would never see, if you think as an individual, how I feel, my experience, well, I've been, I would say, in a very, very privileged kind of a setup. So I would probably not, it's not fair for me to talk about my experience as a woman. But in general, do some women officers have this experience कि हम हमारे साथ, हमें ये opportunity और मिलनी चाहिए? No, that I think is again that attitude, the mental tenacity which you have. Because today, while I'm sitting in a place like Jammu and Kashmir, when I was going there were people who looked upon my posting as a matter of sympathy. आप कहाँ फंसने जा रहे हो? हम बात करें, आपका ये रुकवा दें. And here I am so excited about the fact that I'm going to a very exciting and challenging place where I can prove the way, I look at opportunities of challenge to make a difference, a positive difference. So it's how you perceive. So, somewhere our own, today as I see so many young women across the tables, don't I feel immensely proud by the kind of changes that all of you are making? It's not just startup. I think it's startup to stand up, to scale up, which all of you are doing today. So I feel proud, and government, by the way, has acted as an enabler to this change. How? Through Mukta ji is here, through number of legislations. So even if we think that the legislations are not making a difference, there's a tool in your hands. Whether it's sexual harassment at workplace, whether it is the Maternity Benefit Act, whether it is your Domestic Violence Act, you have a definite tool with you, an instrument with you, which is definitely enforceable, no matter, what the delay is. Justice can be delayed but not denied. So we need to recognize that this change has also come from legislations, from executive, from policy, and ultimately, I think somewhere down the line, we being representing different pillars over here, we ourselves in our own individual capacity as women, at times when we reflect at our responses to things, then you question ourselves that
Is it more laws? Is it more policies? Is it more schemes? Or your own mental tenacity today which is going to make far more of difference? Thank you. ये रिचा आपने बहुत अच्छी बात ये कही, क्योंकि अगेन लुकिंग एट दिस लाइक रूम, a room where it is not actually representative of the country at all, I would say. ठीक है, now this is a very very privileged lot. You know, somewhere down the line, the fact of your presence in this very hall makes you somebody who's extremely fortunate and privileged. Now, having said that, you know, we sitting here on the dais, probably even more privileged that, you know, whether you like it or not, you're listening to us. आप हमारी बात सुन रहे हैं, बहुत बड़ा privilege. नहीं, देखिए बात बिल्कुल सही है. Individually we have had our own story where we realize कि there were different kinds of odds which all of us faced. I agree with you totally. The odds at the time when I would have joined the civil services would have been a choice where, you know, the natural inclination for family, especially from where I came from, Bihar, टीचर बनना है. जबकि मैं तो मानती हूँ कि टीचर बनना बहुत अच्छी बात है, अच्छे टीचर की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ आज अच्छे शासक, अच्छे प्रशासनिक सेवा में कार्यरत लोगों की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है. तो वहाँ पे एक चॉइस हो जाता है. चॉइस ये हो जाता है कि अरे आपको कम समय काम करना है, ज़्यादा समय काम करना है, यू नो, ऑल दिस बिकम्स अ मैटर ऑफ चॉइस. नाउ हियर द क्वेश्चन इज that, you know, when we are exercising that choice in our own individual life, we understand, हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, that you want the tough way. Now, Richard, 2 examples which I want to narrate, जो कि बहुत कॉन्ट्रास्ट है भक्ति आपके एग्जाम्पल से, जहाँ पे राजस्थान के एक गांव में एक सरपंच वो कहती है कि नहीं, मैं कभी कभार मतलब पंचायत में अपने चली जाती हूँ. मैंने कहा कभी कभार मतलब कब? जब समय मिलता है घर के काम से तब. तो मैंने पूछा घर के काम से समय कब मिलता है? वो कहती है कभी नहीं मिलता है. तो ये देखिए, तो यह भी एक नैरेटिव है कि अगर कभी नहीं मिलता लेकिन आपने एक जिम्मेदारी ले ली, तो इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने की जिम्मेदारी किसकी है? वह भी तो मेरी और आपकी है. इसी तरह से मैं अपने गांव बिहार में वहाँ गई जहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराने के समय वह सरपंच, महिला सरपंच आती है और वह प्राउडली कहती है, देखिए मैं यह 2 दिन तो आ जाती हूँ झंडा फहराने के लिए. आई वाज शॉक्ड. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जिम्मेदारी की भी बात हो रही है. नाउ इकोसिस्टम, सिर्फ महिला पे जिम्मेदारी को ठोस देना या उसके ऊपर पूरी की पूरी जवाबदेही उसके ऊपर दे देना, और हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं वो इकोसिस्टम के लिए कुछ ना करें, वह एक अन्याय है. वही मैं आपकी बात से सहमत हूँ. अब उसके लिए हम करें तो क्या करें? उस सोच को हम तब बनाएं जब वह महिला जीत करके आती है, सरपंच बनती है और प्रतिनिधि के रूप में वह आती है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो प्रॉक्सी के ही रूप में है, जहाँ कार्ड में वो पीएम मतलब प्रधानपति जो कोई है या मुखियापति, एमपी लिख करके कार्ड जो है वो आज भी जा रहा है मुखियापति के रूप में. वो प्रॉक्सी है, आज भी वह प्रॉक्सी है. क्यों? क्योंकि जब शिक्षा का समय था उस समय उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिला कि वह अच्छी शिक्षा ले पाए. जब अपने हुनर के विकास का समय था, हुनर का विकास मतलब क्या? ऐसा नहीं कि मैं बहुत एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही हूँ इन अ बिगर टर्म ऑफ बिजनेस एंड माइक्रो एंटरप्राइज एंड माइक्रो फाइनेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल फाइनेंशियल लिटरेसी. नाउ लेट मी टेल यू टुडे दैट वी आर एट अ वेरी वेरी डेंजरस cusp change where lot of responsibility cast on the representatives of these vital pillar of democracy who probably do not understand because उनकी तैयारी ही वैसी नहीं हुई है, उनकी पृष्ठभूमि ऐसे नहीं बनी है. मैंने अभी कुछ महिलाओं से बात की जो अपना DSC एक होता है जिसको कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है, सिग्नेचर, जिससे कि बहुत सारे पैसे निकल जाते हैं. मान लीजिए आपको नरेगा का काम, आपको पता होगा कि नरेगा का काम कराना है बहुत सारे सरकारी स्कीम में, जो सरपंच का दस्तखत चाहिए और सचिव का दस्तखत चाहिए, जिससे पैसे निकलते हैं. करोड़ों के पैसे कभी कभी निकल जाते हैं और उस महिला प्रधान को, सरपंच को, मुखिया को शायद उसको पता नहीं कि उस DSC का, डिजिटल सिग्नेचर का, जो उसने इनोसेंस में, जागरूकता के अभाव में, पूरी जानकारी के अभाव में, प्रशिक्षण के अभाव में
उस प्रशिक्षण को मैं कहती हूँ कि दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी. You need to understand the kind of fraud which can happen with you. There are women who have gone in jail, because of their innocence. Today, we cannot afford to be that gullible. We cannot afford to be that innocent. We all owe it to other women कि वो ecosystem which actually starts very young. We are talking about young women getting prepared. We want them to be in higher position of leadership. I mean, personally, I would love to see each woman getting that opportunity, to excel and to go to that highest point, in whichever field, to break the glass ceiling, whichever field. लेकिन उस लीडरशिप के लिए तैयार जल्दी करना पड़ता है, पृष्ठभूमि को जल्दी बनानी पड़ती है. तो अभी भी देर नहीं है, इसको हमें बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए. जहाँ जहाँ जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, हम सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं. आज ही मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन एक ग्राम पंचायत में वो 4 बच्चियाँ जो कि मंदिर के दरवाजे पे बैठी हुई थी, स्कूल नहीं जा रही थी, वो ड्रॉप आउट थी. वो कुछ एक उसमें से आउट ऑफ स्कूल थी जो कभी नहीं गई. तो वहाँ जाने का मुझे सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह मिला कि उसका स्कूल में दाखिला हुआ. और वो क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे, जिसके बगैर एडमिशन नहीं हो रहा था. तो आज भी ये सब विषमताएँ हैं. लेट्स रिकग्नाइज द फैक्ट. दैट्स व्हाई आई से वी आर प्रिविलेज्ड बिकॉज we've gone through a process and today we are able to talk about it. But many, who have just started this process, so we all owe it to them to build that ecosystem. While I really appreciate, the cases which have been talked about, and I really feel that individually, each one of us is in a position to create these, huge role modeling effect and a cascading effect, which Navka, you, Justice Mukta spoke about. So, while I don't talk about that, what's very satisfying for a person like me who has seen shift in policies over the period is, having contributed in gender sensitivity in planning, gender sensitive planning, and engendering the planning and policy process, which is very, very, very important. Why very important? Because today, somewhere different states are watching out. What are the indicators? Whether it's child sex ratio at birth, whether it's child sex ratio overall, whether it's overall sex ratio, leave aside child sex ratio, these 3 things are different, as you'd be aware. Yeah? So somewhere, it's also, as you say, name and shame. तो कहीं पे यह भी है कि आज जेंडर इंडिकेटर्स वॉच किए जा रहे हैं. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम इसको लेकर के कॉन्शियसनेस है, एक बोध है. इंडिकेटर्स अभी क्रिटिकल है, लेट मी टेल यू. इंडिकेटर्स अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं है जिसमें हम सबकी भूमिका है, लेकिन एक बोध है, एक कॉन्शियसनेस है, एक अकाउंटेबिलिटी का एहसास है, जहाँ पर मतलब अगेन आई विल नॉट इलैबोरेट, बट दिस इज समथिंग पॉजिटिव, एहसास कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है.